हेलो स्टूडेंट जैसा कि जानते हैं आप, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक लिमिट्स, जो कि जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम टॉपिक लिमिट्स, टॉपिक्स, फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, एल हॉपिटल रूल एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। लास्ट वीडियो में ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। नाउ स्टार्ट करेंगे विद टॉपिक, कुछ रिजल्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे टॉपिक। फर्स्ट रिजल्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x1। लिमिट नेक्स्ट रिजल्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x by x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट रिजल्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। Same results for inverse trigonometry, that is limit x approaches to 0 sin inverse x upon x is equal to 1 and limit x approaches to 0 tan inverse x upon x is also equal to 1। बहुत बेसिक रिजल्ट्स हैं। मींस इफ लिमिट x approaches to 0 sin x by x by 1 है, like first result, अगर लिमिट x approaches to 0 sin x upon x is equal to 1 है, therefore limit f of x approaches to 0, f of x approaches to 0, f of x approaches to 0 sin f of x divided by f of x is also is equal to, means जो नंबर ऊपर आ जाएगा सेम नंबर नीचे आ जाएगा, then this expression is 1। For example, if we have limit x approaches to 0 sin 5x upon 5x, ऊपर नीचे सेम नंबर है, therefore this term is equal to 1। क्लियर है, याद है रिजल्ट्स। नाउ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। लिमिट x approaches to 0 sin square x upon root 2 1 minus under root of 1 plus cos x। 2019 क्वेश्चन है, जेई क्वेश्चन। नाउ पुट करोगे x अप्रोचेस टू 0 पुट करोगे, इट इज अ 0/0 फॉर्म। अगर पुट करोगे दिस फॉर्म इज अ 0/0 फॉर्म। अगर साइन स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर अंडर रूट 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, डायरेक्टली पुट करोगे साइन 0 इज 0, न्यूमिनेटर टर्म 0, डिनोमिनेटर cos 0 1, then root 2 minus root 2 is 0. This number is also is equal to 0. दो मेथड्स हैं, एल हॉपिटल रूल और रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन स्टार्ट करोगे, रैशनलाइजेशन मेथड, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इनटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डिनोमिनेटर रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स। न्यूमिनेटर टर्म सेम आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर टर्म्स की सेम, साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टर्म a माइनस b इंटू a प्लस b, a minus b into a plus b, a square minus b square, a square minus b square means this term is 2 root 2 square 2 minus 1 plus cos x, minus 1 plus cos x। Now this expression is equal to this term, this expression is equal न्यूमिनेटर टर्म लिमिट x approaches to 0 sin square x into under root of 2 plus under root of 1 plus cos x whole divided by 2 minus 1, 2 minus 1 is 1 minus cos x, 2 minus 1 is 1, 1 minus cos x। नाउ डिनोमिनेटर टर्म फॉर्मूला पता है, डिनोमिनेटर टर्म फॉर्मूला
limit x approaches to 0, sin square x into root 2 plus under root 1 plus cos x, whole divided by denominator term formula 2 sin square x by 2. Denominator term formula is 2 sin square x by 2. Now, limit x approaches to 0. This term is sin x. Sin x square hai and denominator sin x by 2 whole square. We write these terms as whole square into root 2 plus under root of 1 plus cos x whole divided by 2. Value of this term is equal to 1 हो जाएगा. किस तरह 1 होगी टर्म? चेक करो स्टेप्स चेक करोगे, टर्म किस तरह बन जाएगी. लिमिट x approaches to 0. This term is sin x upon x multiply and divide by x करोगे, this term is 1. Similarly, जो sin x by 2 है, sin x by 2 multiply and divide by x by 2 करोगे, then this term is also 1. Whole square into directly value put करो 0. 0 put करोगे, this term is root 2 1 plus cos 0 whole divided by 2. Now, according to limit, this expression is equal to 1 क्योंकि limit sin x approaches to 0 है. This term is also is equal to 1. x cancel हो जाएगा, x cancel. Now remaining term is 1 into 2 ऊपर चला जाएगा 2 whole square into पुट करोगे, this is root 2 into root 2 plus root 2 whole divided by 2. 4 into final answer is this term is 2 square 4 into 2 root 2 upon 2. 2 cancel हो जाएगा, final answer is 4 root 2. That is C option. According to question, the option is C. Option is C. Option is your final answer. C option is your final answer. Clear है students? I think clear होएगा. Easy question. Now, next question. Easy है अगर with the help of L'Hopital rule भी करोगे. Same ही easy question आ जाएगा. Next question. काफी अच्छा question. 2020 if alpha is the positive root of the equation, this term, alpha positive root hai of this equation, then limit x approaches to alpha positive. For positive term karoge, under root of 1 minus cos px upon this term. Now, first term, alpha is a positive root. First term, find out karo alpha, positive root of this expansion. Positive root of this term. Roots find out karo of this equation. Roots of this equation. X square minus x minus 2 is equal to 0. Now roots करोगे बेटा. This is x square minus 2x plus x minus 2 is equal to 0. Now 2 plus 1 common x minus 2 is equal to 0. 2x plus 1 into x minus 2 is equal to 0. Value of x is equal to and value of x is equal to 2. Value of x is equal to minus 1 and value of x is equal to 2. Value of x minus 1 and value of x 2 है. One root negative आ रहा है, other root is positive. देखो this root is negative and other root is positive. Now our alpha is positive root. Alpha is positive root. Therefore this term is alpha. Alpha is equal to positive root, that is alpha is equal to 2 is your positive root. Means value of alpha clear hai, that is 2. Now put karo in this expression, put karoge in this expression, limit x approaches to alpha, alpha positive means 2 positive, under root of 1 minus cos px, px means this expression, px is this expression, and this expression is x square minus x minus 2 whole divided by
x plus 2 minus 4. Now जो टर्म बनेगी लिमिट x approaches to 2 positive means on the positive side 1 minus cos a. Formula for 1 minus cos a is 1 minus cos a. 1 minus cos a is equal to 2. Formula for 1 minus cos a is 2 sin square a upon 2. Formula for 1 minus cos a is 2 sin square a by 2. Now this expression is written as 2 sin square a upon 2. Value of a is this part, x square plus minus x minus 2 whole divided by 2. Denominator x minus 2. Denominator term is x minus 2. Now, under root of, one more thing, under root of x square is written as, under root of x square is written as mod of x. Now, this numerator expression is written as limit x approaches to 2 positive. This is root 2 sine x square minus x minus 2. X square minus x minus 2. Modulus क्यों? Because under root of x square is equal to mod of x. Denominator term x minus 2. Denominator term is x minus 2. Now, x square minus x minus 2. X square minus x minus 2 is also written as the in expression x plus 1 into x minus 2 expression. पता है ना? In roots form we write numerator term in this expression form. And this term is 2 positive. 2 positive means always positive. कुछ भी put करोगे always positive आएगा. Therefore, limit x approaches to 2 positive. We write this term as a root 2 means only for positive side. Only for positive side, we use this term as a positive term. Only positive term means no requirement of modulus because of 2 positive. And this internal term is written as, x plus 1 into x minus 2 whole divided by 2. Denominator term is x minus 2. Denominator term is x minus 2. Clear as student? This expression is written as this term. X plus 1 upon x minus 2 whole divided by 2. Now, angle is this part. Limit x approaches to 2 है. Put करोगे, this number is 0. Put करो 2 positive, 2 minus 2 is 0. Therefore, this term is 0. Denominator term is also 0. 1 करो. Use करो result sin theta upon theta. Means जो expression ऊपर है, same expression नीचे लिखे आओ. For same expressions, we write this term as limit x approaches to 2 positive root 2 sine x plus 1 into x minus 2 whole divided by 2. Denominator term is x minus 2. We multiply with the number x plus 1 upon 2 in denominator and also in numerator. X plus 1 upon 2. This whole expression, because this term is 0, by using limit of this part, this term is equal to 1 sin x by x. Now, this is root 2 and x put karoge 2 in this expression. This is 2 plus 1 upon 2. Now, term is equal to root 2 into 3 by root 2. Cancel karoge, this expression is equal to 3 upon root 2. Therefore, 3 by root 2 is your final answer. 3 by root 2. B option is your final answer. Clear है students? Now, easy question. कोई difficult नहीं है. Next question. Now, इसी साल in same year 2021 March attempt question है, first shift question. Limit x approaches to 0, sin inverse x minus tan inverse x whole divided by 3x cube is equal to L. Means its answer is L. Then find the value of 6L plus 1. Easy question है, काफी easy question. देखो किस तरह बेटा. This expression is written as limit
x अप्रोचेस टू 0, नॉर्मल 0 बाय 0 फॉर्म है, साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन 3x क्यूब, 3x क्यूब. This expression is written as sin inverse x minus tan inverse x whole divided by 3x. Convert करो sin inverse x in terms of tan inverse x by using inverse trigonometry. By using inverse trigonometry convert करोगे sin inverse x. Sin inverse x, this term is x, 1. Denominator term is under root of 1 minus x square. Now write sin inverse x in terms of tan inverse. For tan inverse, we use perpendicular upon base. This term is written as tan inverse x upon under root of 1 minus x square minus tan inverse x whole divided by 3x cube. In numerator term, formula apply करो tan inverse a minus tan inverse b. In numerator term, formula apply करोगे tan inverse a minus tan inverse b. Formula for tan inverse a minus tan inverse b. Tan inverse a minus tan inverse b. Formula apply करो. This is tan inverse a minus b upon 1 plus ab. Numerator term formula apply हो जाएगा. Tan inverse a minus b upon 1 plus ab. This term is written as limit a x a minus b मतलब x whole divided by under root of 1 plus ab x upon under root of 1 minus x के into x whole divided by whole term divided by 3 whole term divided by 3x cube. This whole expression is divided by 3x cube. Now LCM of this term करो, LCM of this term 1 and 1. LCM of numerator term use करोगे बेटा. LCM of numerator term is 3 limit x approaches to 0. Limit x approaches to 0. This is tan inverse. LCM apply करो बेटा. LCM आ जाएगा x minus x under root of 1 minus x square whole divided by under root of 1 minus x square. Denominator term under root of 1 minus x square LCM plus x square पूरी term under root of 1 minus x square. LCM of expression, we use LCM of these two terms whole divided by 3x cube. Under root of 1 minus x square cancel हो गया. Remaining term is limit x approaches to 0. Tan inverse x minus x under root of 1 minus x square whole upon under root of 1 minus x square plus x square and divided by 3x cube. Clear है term? Now, if we put x 0, 0 minus 0, 0. Therefore, अगर same term denominator आ जाए, then this expression is equal to 1 हो जाएगा. This expression is 1 if, देखो ना, by using the formula tan inverse x, formula use करोगे tan inverse x upon x is equal to 1. क्योंकि put करोगे this term is 0, put करो x 0, this term is 0. By using this result, this expression is 1. So we multiply and divide by this whole expression. We multiply and divide by this whole expression so that this tan inverse is a 1. Now multiply and divide by same expression करो. Multiply and divide. This term is limit x approaches to 0. Now tan inverse x minus x under root of 1 minus x square whole upon under root of 1 minus x square plus x square upon divided by same term. Divided by same number means this number is x minus x under root of 1 minus x square upon under root of 1 minus x square plus x square. Divide by same number, then multiply by same term. Multiply by same term x minus x under root of 1 minus x square upon
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. This whole expression is equal to 1 and denominator term is 3x cube in this case. This whole expression is 1 by using this result. This term is 1. Now, remaining term is limit x approaches to 0 into this part. And the remaining part is only this part question. And simple question हो जाएगा. Remaining term. देखो remaining term को बच्चों. Remaining term is this expression. Now, remaining part of question is limit x approaches to 0, x minus x under root of 1 minus x square whole divided by under root of 1 minus x square plus x square. चेक करो, whole divided by 1 है, that means 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा and 3x square 3x cube इस जगह 1 ऊपर चला जाएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 1. Now from numerator 1 कॉमन हो जाएगा, from numerator x कॉमन, x 1 minus under root of 1 minus x square whole divided by 3x cube and under root of 1 minus x square plus x square. x cancel हो जाएगा, this term is 3x square बचेगा remaining. Remaining term limit x approaches to 0. Numerator term rationalize करो, under root of 1 minus x square into 1 plus under root of 1 minus x square whole divided by 3x square, 3x square into 3x square into under root of 1 minus x square plus x square whole divided by this expression is 1 plus under root of 1 minus x square, means rationalization of this numerator part. Now numerator part is a minus b into a plus b. A minus b into a plus b. This expression is limit x approaches to 0. A minus b into a plus b is 1 minus a minus b, a plus b. This is 1 minus x square. A square minus b square under root खत्म हो जाएगा. This expression is a minus 1 minus x square. This term is 1 minus 1 by x square whole divided by 3x square into जो भी term remaining बचेगी plus x square into 1 plus under root of 1 minus x square. 1 1 cancel हो जाएगा, numerator x square denominator भी x square. देखो स्टूडेंट्स 1 1 cancel, 1 1 cancel हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी टर्म कैंसिल हो जाएगी. रिमेनिंग टर्म वैल्यू ऑफ एक्स जीरो पुट कर दो, रिमेनिंग टर्म वैल्यू ऑफ एक्स जीरो पुट करो, वैल्यू ऑफ एक्स जीरो पुट करोगे, वैल्यू ऑफ एक्स जीरो पुट करोगे, दिस टर्म इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट ऑफ 1 जीरो पुट करोगे ना प्लस 0 अंडर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 1 माइनस 0. नाउ दिस एक्सप्रेशन इज 1 1 plus 1 is 2. This term is whole term is equal to 1/6. This whole expression is equal to 1/6. Calculation करो. This is 1 plus 1 2 into 3 6. This whole expression is equal to C. Therefore, this term is equal to L and L is equal to आ जाएगा 1/6. And according to question, check करो बेटा question. 6L plus 1 find out करना है. 6L plus 1 and L किससे को लगा बेटा? L is equal to चेक करो 1/6. L is equal to 1/6 and find out करना है. L is equal to 1/6 है बेटो. चेक करो बेटा. Here L is equal to 1/6 and find out करना है 6L plus 1. In question find out करना है 6L plus 1. 6L is equal to now L is equal to 1/6 आंसर आया. 6L is equal to 1. If we add 1 in this expression, this is 1 plus 1. Final answer of 6L plus 1 is equal to 2. Therefore, final answer is equal to 2. 2 option. थोड़ा lengthy question है, but easy question in this year. 2021. Same year question. Clear है students? No. चेक करोगे स्टूडेंट्स. सेम 2021 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन. नाउ बहुत इजी क्वेश्चन. ओनली फॉर्मूला अप्लाई करोगे साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी.
साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस। क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, वैल्यू पुट नॉर्मली पुट करोगे इट इज 0/0 फॉर्म, वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करो, √3 साइन ए मीन साइन π/6 cos h प्लस cos π/6 sin h minus cos A cos B, formula of this term, cos A cos B minus sin A sin B, whole divided by under root 3h into √3 cos h minus sin h. Value of sin 30 1/2, value of cos 30 √3/2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू √3 1/2 cos h प्लस √3/2 sin h माइनस cos 30 √3/2 cos h minus 1/2 sin h, whole divided by √3h into √3 cos h minus sin h. क्लियर है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर टर्म, न्यूमिनेटर टर्म मल्टीप्लाई करोगे दिस एक्सप्रेशन इज रिटन एज, न्यूमिनेटर टर्म मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, this 2 cos h, this is 3/2 sin h minus √3/2 cos h minus minus plus 1/2 sin h, whole divided by under √3h into √3 cos h minus sin h. √3/2 cos h कैंसिल, 3/2 प्लस 1/2 किससे इक्वल आएगा, 3/2 प्लस 1/2 4/2, 4/2 sin h। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन भी खत्म हो गया। दिस इज न्यूमिनेटर टर्म इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, this term is 4/2, 3 plus 1 4, 4/2 means 2 sin h, whole divided by √3 into h into √3 cos h minus sin h. Value of this part is, क्योंकि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है 1, this part is 1 and term किससे इक्वल बचेगी 2/√3 into 1 upon value of h 0 पुट करोगे, this is cos 0 1 and sin 0 is 0 and the final answer is 2/3. चेक करो, D option is your final answer. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी ईयर 2021 क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन। नाउ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे बेटा, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a आ जाए, f of x, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a मींस अदर देन 0 कुछ भी टर्म आ जाए, देन फॉर इजी मेथड वी आइदर पुट x इज इक्वल टू a प्लस h और वी पुट x इज इक्वल टू a माइनस h। फॉर इजी मेथड, फॉर इजी टर्म वी यूज आइदर x इज इक्वल टू a प्लस h और a माइनस h, a प्लस h यूज करोगे और a माइनस h, कुछ भी यूज करोगे बेटा, a प्लस h चूज करो और a माइनस h चूज करो। इफ x अप्रोचेस टू a है, देन h ऑलवेज अप्रोचेस टू 0 आएगा। x अप्रोचेस टू a, देन h ऑलवेज अप्रोचेस टू 0। सिमिलरली इन दिस केस, इफ x अप्रोचेस टू a, देन h इज ऑलवेज अप्रोचेस टू 0। कोई भी वन मेथड करो, मींस इट इज राइट हैंड लिमिट, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, कुछ भी यूज करो। If limit x approaches to a other than 0 term है means and directly function solve करना possible नहीं है, then we use either x is equal to a plus h means right hand limit, a minus h means left hand limit।
कुछ भी यूज करो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किस तरह क्वेश्चन चेक करोगे बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इजी क्वेश्चन है। JEE 2017 क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x होल क्यूब। देखो x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 है, x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, डायरेक्टली पुट करोगे कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली करोगे कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो वी यूज x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 है, देयरफॉर वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, मींस पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h करो, मैं माइनस h कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पाई बाय 2 माइनस h, x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, पुट करो पाई बाय 2, पाई बाय 2 पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस h अप्रोचेस टू 0, h ऑलवेज अप्रोचेस टू 0 आएगा। h इज अ वेरी स्मॉल नंबर जो कि अप्रोचेस टू 0 है। नाउ लिमिट 0, नाउ क्वेश्चन इज cot value of x is pi by 2 minus h minus cos pi by 2 minus h whole divided by denominator pi minus 2 into pi by 2 minus h whole cube. Clear है टर्म? Now cot 90 minus theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta. Cot 90 minus theta is tan theta. Cos 90 minus theta is sin h whole by 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 प्लस 2h, देखो ना 2 कैंसिल, दिस इज पाई माइनस पाई 0 माइनस माइनस प्लस 2h होल क्यूब इज योर टर्म, 2h होल क्यूब. No, 2h whole cube means this term is 8. Limit h approaches to 0. Numerator term tan h, numerator term tan h minus sin h. देखो जो tan h है पॉसिबल है लिखना tan h एज अ sin h अपॉन cos h माइनस sin h माइनस sin h होल डिवाइडेड बाय 8h cube whole divided by 8h cube. Now limit h approaches to 0, LCM apply करो बेटा, this is sin h minus sin h into cos h whole divided by cos h and into 8h cube भी आ जाएगा into 8h cube. Now sin h कॉमन आ जाएगा from numerator, sin h common, sin h common, internal term 1 minus cos h whole divided by cos h into 8h cube. Sin h by cos h is tan h, trigonometrical term. Sin h by cos h is tan h. Now this term is tan h. Sin by cos is tan h. This limit is limit h approaches to 0 is tan h. देखो डिनोमिनेटर टर्म h क्यूब है, पॉसिबल है लिखना दिस इज 1 माइनस कॉस h अपॉन 8. देखो h क्यूब है, h क्यूब h स्क्वायर इनटू h. देखो जो h क्यूब है पॉसिबल है h क्यूब लिखो, h क्यूब एज अ h स्क्वायर इनटू h. नाउ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, tan h by h is tan h upon h is 1. This term is 1 into remaining part is limit h approaches to 0, 1 minus cos h upon 8h square. पॉसिबल है अगर दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करो, और 0 by 0 फॉर्म है, मैं एल हॉपिटल अप्लाई कर देना, एल हॉपिटल, दिस इज 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos h is sin h whole divided by 16h. L Hopital means numerator separate differentiation, denominator separate differentiation. This term is sin h by h is 1. Therefore, answer is 1 by 16 into 1 is 1 upon 16 is your final answer. 1 by 16 means A option is your final answer. A option final answer है. कोई doubt? Clear है students?
इजी क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मींस प्रेजेंस ऑफ लिमिट। प्रेजेंस चेक करनी है मींस लिमिट एक्स फर्स्ट टर्म डिफाइन करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए डज नॉट एग्जिस्ट इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड इन द नेबरहुड। अगर फंक्शन नेबरहुड में डिफाइंड नहीं है, इफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन इट्स नेबरहुड, देन इट इज नॉट एग्जिस्ट। नॉट डिफाइंड मींस नॉट डिफाइंड बाय टू फंक्शंस आएगा, आइदर 1/0 देन इट इज नॉट डिफाइंड, और अंडर रूट टर्म नेगेटिव हो जाए देन इट इज नॉट डिफाइंड। अंडर रूट टर्म नेगेटिव मींस एओटा आ जाएगा, बट एओटा इज नॉट रियल नंबर, देयरफॉर वी यूज दिस टर्म एज अ नॉट डिफाइंड टर्म। अगर टर्म आ जाए डज नॉट एग्जिस्ट आएगा इफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन इट्स नेबरहुड। नेबरहुड से लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर नेबरहुड, दैट इज जो फर्स्ट वीडियो डिस्कस किया था, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव, दीज टर्म्स आर आवर नेबरहुड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर कोई फंक्शन अपने नेबरहुड में डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, फॉर एग्जांपल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट इन रूट एक्स is not defined in its left of 0, means left of 0 means 0 कोई भी नंबर है, -1 1, left of 0 means this point, limit is not defined, means limit x approaches to 0 is not defined in this part, because if we put value of x in negative term, 0 left is negative part, if we write this is 0 negative means left part, 0 नेगेटिव मींस कुछ नेगेटिव नंबर आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, दैट मींस दिस एक्सप्रेशन इन नेगेटिव पार्ट। अगर अंडर रूट टर्म नेगेटिव हो जाएगी, दैट मींस नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू मींस नॉट डिफाइंड, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन इट्स लेफ्ट नेबरहुड। रूट एक्स इज नॉट डिफाइंड इन इट्स लेफ्ट नेबरहुड, देयरफॉर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस चेक, दैट मींस फर्स्ट टर्म चेक करोगे कि फंक्शन डिफाइंड है इन इट्स नेबरहुड। अगर फंक्शन डिफाइंड है इन इट्स नेबरहुड, देन चेक करोगे सेकंड स्टेप, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ टर्म्स। मींस रीड करो, फंक्शन इज डिफाइंड इन बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड। अगर दोनों तरफ डिफाइंड है, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी, देन फाइंड लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट्स फाइंड आउट करो। If both of these limits exist, अगर दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगी एंड आर इक्वल, एंड इक्वल भी आएंगी, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे, अगर इक्वल भी आ जाएंगी, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 0 कुछ भी लिखो, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बोथ द लिमिट्स आर सेम हो जाएंगी, मींस कोई भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 0 कुछ भी आए, अगर बोथ द टर्म्स आर इक्वल, they are defined in its neighborhood and terms are also equal, defined in neighborhood and terms are also equal, then this limit exists, otherwise does not exist. Clear hai students? Now kuch examples for existence of limits, like this example. Check whether the function limit x approaches to 3, this bracket represents zint of x, zint of x exists or not, zint of x exists or not. Discuss its left hand limit and its right hand limit. Now, firstly we discuss about hand limit. Left hand limit. Left hand limit means limit x approaches to 3 negative. 3 negative, zint of x. And right hand limit, for right hand limit, we write this term as a limit x approaches to 3 positive, zint of x. 3 negative zint of x, 3 positive zint of x. For 3 negative, we use for easy method, put x is equal to 3 minus h. For left limit, we use 3 negative, and for right hand limit, we use 3 positive. This is 3 positive. For left hand limit we use 3 negative, for right hand limit we use 3 positive. Now,
If we put, if x approaches to 3, if x approaches to 3, then h is approaches to 0 आ जाएगा. If x approaches to 3, then h approaches to 0. Therefore, this number is limit h approaches to 0. Put करो in this condition. This is zent of 3 minus h. Zent of 3 minus h. And if we put in this side, x approaches to 3, then h is approaches to 0. Same term आ जाएगा, same steps. Same steps आ जाएंगे. Now, limit h approaches to 0. This expression is under root of 3 plus h. This expression is under root of 3 plus h. Now 3 negative and 3 positive means, 3 negative means if number line है 3, 2, 4. देखो बच्चों इस साइड. If we subtract any term from 3, any term means कुछ भी. If we have 3 left of 3 means 3 negative. Left of 3 means 3 negative, then zent is 2. Zent expression is 2. And if we write 3 positive, then if we write 3 positive means 2, 3, 4. If we write 3 positive means इस जगह तो ऊपर आ जाएगा. Then its left integer is 3. Now check करो, left hand limit 2 आ जाएगी, right hand limit 3 हो जाएगी. That means limit not equal means limit not exist करेगी. Does not exist. Limit does not exist. Means for 3 negative, 3 negative means normal quotient. 3 negative means this point. For this term zent is 2. Answer भी लिख पाओगे. और for 3 positive term here 3 greater than 3, left term is 3. Means zent terms are not equal. Left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore, limit does not exist. Clear है students कुछ? Limit does not exist. Now, JEE question based on this term. अगर क्वेश्चन अगर does not exist आ जाए, हर बार जरूर चेक करो. If in option does not exist आ जाए, then हर बार चेक करो whether limit exist है or not exist. Whether limit exist or not exist. JEE question है 2011. Limit x approaches to 2 under root of 1 minus cos 2 into x minus 2 whole divided by x minus 2. Now, under root of 1 minus cos 2. 1 minus cos, formula for 1 minus cos 2. Normal formula for 1 minus cos 2. 1 minus cos 2 formula बोलो बेटा. 1 minus cos 2a. 1 minus cos 2a is equal to 2 sin square a. 1 minus cos 2a is equal to sin square 2 sin square a. And other term, under root of x square is equal to mod of x. Now, in this question, if we write this approaches to 2, numerator term is under root of 2 sin square x minus 2. देखो एंगल 2 है, आप करोगे this is x minus 2 whole divided by x minus 2 whole divided by x minus 2. Now under root square is mod of x. Under root square is mod of x. This term is mod of x, and this we write this expression as root 2 sin x minus 2 whole modulus upon x minus 2. Upon x minus 2. We use this term as a modulus symbol. Modulus of this expression. Modulus of this term. Now, अगर term modulus of this term है, does not exist limit है, then check करोगे left hand limit and right hand limit for this condition. Left hand limit and right hand limit for this condition. Left hand limit. For left hand limit, in this term, we put x is equal to 2 minus h. X approaches to 2, then h approaches to 0 हो जाएगा बेटा. Now, limit h approaches to 0. This is root 2 mod of sine.
पुट करो 2 माइनस एच माइनस 2 मॉडुलस अपॉन डिनोमिनेटर 2 माइनस एच माइनस 2। 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इज लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 2 साइन एच माइनस एच है, साइन ऑफ माइनस एच होल मॉडुलस डिवाइडेड बाय माइनस एच। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बट मॉडुलस है दिस टर्म इज माइनस आएगा, बट मॉडुलस है दिस टर्म इज पॉजिटिव, होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। Limit h approaches to 0, sin h by h is 1, and the final answer is minus root 2 for left hand limit. For left hand limit, final answer is minus root 2. Similarly, for right hand limit, we put x is equal to 2 plus h in same expression. In same term, we put x is equal to 2 plus h. X approaches to 2, then h approaches to 0. Number check karo term, limit h approaches to 0, this is under root 2, modulus of sine 2 plus h minus 2 whole divided by, this is 2 plus h minus 2. 2 cancel हो जाएगा, 2 cancel. This expression is limit h approaches to 0 अंडर रूट 2 साइन एच अपॉन एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 है, रूट साइन एच बाय एच है, दिस टर्म इज इक्वल टू 1, दिस इज रूट 2। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, देयरफॉर लिमिट देखो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस रूट 2, राइट हैंड लिमिट इज रूट 2, देयरफॉर दीज टू टर्म्स आर नॉट इक्वल। अगर टर्म नॉट इक्वल है, दैट दिस मींस दिस एक्सप्रेशन इज, this term does not exist, means C option is final answer. C option is your final answer. Clear है students? कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, विदाउट हम लिखोगे sin x minus 2 upon x minus 2 is 1, root 2 is final answer. Wrong question. If you write root 2 is your final answer. Now, next formulas logarithmic and exponential limits. Next formulas for logarithmic and exponential limits. First term is limit x approaches to 0. ln 1 plus x upon x is equal to 1. ln 1 plus x upon x is equal to 1. Similarly, limit x approaches to 0. ln 1 minus x upon x is equal to minus 1. Limit x approach, third term, limit x approaches to 0. ax minus 1 by x is equal to ln a. And limit x approaches to 0, e raised to power x minus 1 by x is equal to, actually this term is ln e, and ln e is equal to 1. ln e is 1. Same term hai, if we replace our formula like this term, replace limit f of x approaches to 0, ln 1 plus f of x divided by f of x. अगर टर्म आ जाएगी ln 1 plus f of x by f of x is equal to 1 आ जाएगा, अगर all the terms are same, then answer is 1. Clear है students? Now, question based on this. Simple question है, AI EEE means JEE main ही है. Limit x approaches to this term, log of 3 plus x minus log of 3 minus x whole divided x when this term is equal to k. Normal देख विद एल हॉपिटल भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है विद एल हॉपिटल भी, क्योंकि डायरेक्टली पुट करोगे दिस इज 0 by 0 फॉर्म, डायरेक्टली पुट करोगे देन दिस फॉर्म इज 0 upon 0 फॉर्म, 0 by 0 फॉर्म है. अगर एल हॉपिटल भी अप्लाई करोगे डायरेक्टली आंसर हो जाएगा. देखो एल हॉपिटल अप्लाई करो, एल हॉपिटल अप्लाई करोगे 0 by 0 फॉर्म है डायरेक्ट, दिस इज 1 plus 1 upon 3 3 0 difference of x 1 3 of x 1 whole divided by differentiation 1. पता ना एल हॉपिटल अप्लाई हो जाएगा.
नाउ वैल्यू ऑफ एक्स जीरो पुट करो, डायरेक्ट आंसर, वैल्यू ऑफ एक्स जीरो पुट करोगे, दिस आंसर इज इक्वल टू 1/3 प्लस 0 माइनस 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 प्लस, दिस इज 3 माइनस 0 इज इक्वल टू के. आंसर इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू के. दिस इज योर फाइनल आंसर, 2/3 इज योर फाइनल आंसर. इजी क्वेश्चन, इजी वे. डायरेक्टली पूरा भी सॉल्व कर पाओगे, बट मैं डायरेक्टली बाय एल हॉपिटल सॉल्व करता हूं. दिस इज यूजिंग बाय एल हॉपिटल. सिमिलरली सेम क्वेश्चन पॉसिबल है बाय एल हॉपिटल रूल भी पॉसिबल है. मतलब 0/0 फॉर्म में एल हॉपिटल रूल अप्लाई करो, क्वेश्चन हो जाएगा. बट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करांगा बाय कंप्लीट मेथड, e raised to power x square minus cos x whole divided by sin square x. पुट करोगे x approaches to 0, then if we put x approaches to 0, then ऊपर न्यूमिनेटर 1 cos 0 1, नीचे sin 0 0, means 1 minus 1 0/0. this is 0/0 form. एल हॉपिटल पॉसिबल है, बट स्टेप चेक करना. फॉर्मूला यूज करोगे, फर्स्ट टर्म e raised to power x minus 1/x and sin x by x is equal to 1. देखो फर्स्ट स्टेप चेक करना. e raised to power x square minus cos x whole divided by this term sin square x. If we multiply and divide by x square, this whole expression is equal to, this whole term is equal to 1. This whole expression is equal to 1. Now, to power x square minus cos hospital karna bhi after this step, but easy way for this term, easy way, if we this expression is 1, ex square minus 1 plus 1 minus cos x. माइनस 1 प्लस करोगे एक्स स्क्वायर शिफ्ट हो जाएगा इन बोथ. लास्ट टर्म इज 1, दिस टर्म इज 1, कोई रिक्वायरमेंट नहीं कर. नाउ दिस इज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस टर्म इज इक्वल टू 1. बाय यूजिंग फॉर्मूला दिस टर्म इज इक्वल टू 1. दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 हो जाएगी. 1 प्लस रिमेनिंग टर्म की है दिस पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स. 1 minus cos x by x square. Now this is 1. वैल्यू पुट करोगे, एल हॉपिटल अप्लाई कर दो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो और एल हॉपिटल यूज करो. एल हॉपिटल यूज करोगे, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज माइनस, डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स अपॉन 2x. दिस एक्सप्रेशन इज 1, दिस टर्म इज 1, दिस इज 1 प्लस 1/2 is remaining part. This final answer is 3/2. 3/2 is your final option. 3/2 is your final option. 3/2 is your final option. Clear है students? Easy question है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. Now, problem based on 1 raised to power infinity form. If 1 raised to power infinity form means 1 is approaches to, sorry, this is approaches to 1, not exactly 1. Not exactly 1 means अगर क्वेश्चन हो जाए लिमिट f of x approaches to 1, f of x पावर इंफिनिटी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी टर्म आ जाए, g of x आ जाए एंड g of x approaches to infinity आ जाए. अगर क्वेश्चन इन दिस फॉर्म हो जाए, g of x approaches to infinity हो जाए, f of x approaches to 1 आ जाए, then we use result limit x approaches to, जो भी टर्म आएगी इस जगह के ऊपर, जो भी नंबर आएगा, f of x approaches to 1, f of x minus 1 सॉल्व करो, e पावर f of x minus 1 into g of वे डायरेक्ट पुट करोगे, e raised to power limit f of x approaches to 1, f of x minus 1, जो भी नंबर है -1 करोगे इंटू g of x करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, बड़ा इजीली फाइनल आंसर आ जाएगा, बहुत इजी. इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक. चेक करना पास्ट ईयर्स क्वेश्चन.
2020 past year question है based on this expression. 2020 past year question based on this expression. If we directly put value of x is 0, we get tan 45, and value of tan 45 is 1. If we directly put value of x is 0, we get tan 45 and tan 45 is 1, and value of x 0 put karoge, this is approaches to 0, not equal to 0. Therefore, we put 1 by 0. 0 approaches hai, left or right means, then this is infinity. 1 raised to power infinity form. Power infinity form है, expression use करोगे, limit e raised to power, limit x approaches to 0, जो भी number आएगा, f of x means tan pi by 4 plus x minus 1 हर बार करोगे into g of x. G of x is 1 by x. G of x is 1 upon x. Now, this expression is written as limit x approaches to 0. Now, formula for this term is 1 plus tan x upon 1 minus tan x minus 1 into 1 by x into 1 upon x. Now, LCM apply करो in this part. In this part, LCM apply करोगे, term आ जाएगी limit to 1 numerator 1 plus tan x minus 1 plus tan x into 1 by x. Clear है term LCM आ जाएगा, 1 cancel. Remaining term is limit x approaches to 0 e power limit x approaches to 0, numerator term is 2 tan x upon denominator 1 minus tan x whole divided by 1 by x. Now this expression is written as limit x approaches to 0. This is 2 tan x by x, tan x upon x into 1 upon 1 minus tan x. Now tan x by x is 1. Tan x by x is 1. This is 2 into 1 and value of x 0 put karo. This is 1 upon 1 minus 0. This whole expression is equal to e square. This whole expression is equal to e square. Therefore, e square is your final answer. E square is your final answer. बहुत easy method. 1 raised to power infinity आएगा. If 1 raised to power infinity, then put करोगे f of x minus 1 into g of x. Simplification करोगे, simple answer आ जाएगा. बहुत easy method. काफी easy method. Now, next term. Same question. Again, JEE 2020 shift. 1st of January. Now, again check करो. If you put value of x is 0 in this question, if you put the value of x is 0, this is 0, 0. 2 by 2, 2 by 2 is 1. Power 1 by infinity. 1 by 0 approaches that, that means this term is infinity. We use again same result. Limit e raised to power limit x approaches to 0. F of x is 3x square plus 2 all divided by 7x square plus 2 minus 1 into g of x. Into g of x is x square. Now, this expression is written as e limit x approaches to 0. This 7x square plus 2 numerator term 3x square plus 2 minus 7x square minus 2 into 1 by x. 2 cancel. 2 and 2 cancel हो जाएगा. And 2 and 2 cancel. This expression is limit 3x square minus 7x square. This is minus 4x square all divided by
7x square plus 2 into 1 by x square. x कैंसिल हो जाएगा, x square cancel, and in remaining term we put value of x as a 0. Value of x as a 0 put करोगे, this term is limit value of x 0 put करो, directly value of x 0 put करोगे, this term is equal to minus 4 upon 0 plus 2. This is equal to e raised to power minus 2. E raised to power minus 2 means 1 by e square is your final answer. 1 by e square is your final answer. 1 by e square final answer. Clear है students? Now, next question. काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेम फॉर्म, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 plus a by x minus 4 by x square raised to power 2x is equal to e raised to power 3. Then find a is equal to this expression. A find out करोगे for this expression. Now, limit x approaches to infinity. If we put x, a by infinity is 0, 4 by infinity is 0. This is 1 power infinity. Now we use e limit x approaches to infinity, f of x means 1 plus ax minus 4 by x square, f of x minus 1 into g of x, that is equal to 2x, is equal to e power 3. 1 1 cancel हो जाएगा. Now e limit x approaches to infinity. Now this is a by x minus 4 by x square into 2x. Give. Now value x multiply करोगे. If we multiply by x in both the terms, e limit x approaches to infinity in both the terms means this is a 2a minus 8 upon x is equal to e cube. Infinity put करो in this expression. Infinity put करोगे, this term is e raised to power 8 by infinity. E 2a minus 8 by infinity is equal to e cube. 8 by infinity is 0. This term is 0 e cube. मतलब e raised to power 2a is equal to e cube. Therefore 2a is equal to 3. Value of a 3 upon 2. Value of a is equal to 3 by 2. This is your final answer. B option is your final answer. Important question है, अच्छा question, अच्छी form. Now, another form means problem based on 0 raised to power 0 form and infinity raised to power 0. Remaining form 0 raised to power 0 form and infinity raised to power infinity form. Directly L Hospital नहीं use होएगा. कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है. फॉर दिस टर्म वी यूज दिस प्रॉपर्टी, e log x is written as x. पता है e log x means e base e means e ln x is x. We use this property, then convert quotient in 0 by 0 form or infinity by infinity form, and then we use L'Hopital rule. First term, directly quotient. If we put x is equal to 0, this is 0 sin 0, 0 power 0. Convert by using result. Limit x approaches to 0. Using last result, convert करो e ln x sin x. पता है ना? E ln x raised to power sin x, because e ln x is equal to x. Then we write x e ln x. Now, power है by ln property, ln x power n, then it is n ln x. n shift हो जाएगा. According to this term, sin x shift हो जाएगा. Into ln x. E sin x into ln x. Now, again, कोई भी फॉर्म नहीं है. Put करो 0 sin 0 0 ln 0. Infinity
पावर 0 इंटू इंफिनिटी है। कन्वर्ट करो इंटू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म और 0 बाय 0 फॉर्म। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगा। इफ वी राइट दिस एक्सप्रेशन एज लिमिट sin x convert करो in form of cosecant x. Now this is infinity by infinity form. Now this form is infinity by infinity form. Put करोगे x0, this is ln infinity, cosecant infinity. This is infinity by infinity form. Now L'Hopital apply करो in power term. L'Hopital apply करोगे in power terms. In power terms, L'Hopital apply करोगे. This is 1 by x. And cosecant x differentiation is minus cosecant x into cot x. Cosecant x into cot x. Now, if we write cosecant x as a cosecant x लिखो term e power 1 by x into minus 1 upon sin x into 1 by tan x. Shift करोगे न्यूमिनेटर टर्म चली जाएगी. न्यूमिनेटर टर्म is limit x approaches to 0 e power sin x upon x with minus sign into tan x. Into tan x भी in numerator आ जाएगा. tan x भी in numerator आ जाएगा बेटा. tan x in numerator आ जाएगा. This whole expression is equal to 1. This whole term is equal to 1. This is 1 minus 1 into 0 put करोगे in this term tan 0. Tan 0 is 0. Final answer is e raised to power 0. E raised to power 0 is 1. E raised to power 0 is your 1. This is your final answer for this question. Always for forms 0. We use E ln x, then shifting, then convert, then L'Hopital. Same method use करेंगे. Check करना same question for this term. Limit x approaches to 0. Cosecant x raised to power x. Same term. Put करो 0. Cosecant 0 is 0. Cosecant 0 is infinity raised to power 0. This is infinity raised to power 0. Sin 0 0, then cosecant 0 is infinity raised to power 0 form. Use करो same form. Limit x approaches to 0 e ln cosecant x raised to power x. Cosecant x raised to power x use करो बेटा. Now cosecant x raised to power x है, x shift करो in front. Limit x approaches to 0 e x shift करोगे by ln property. This term is ln cosecant x. ln infinity means infinity. 1 by x है. This form is put करोगे 0 into infinity form. Convert करो in infinity by infinity form. किस तरह convert करोगे? By same steps. As e power ln cosecant x whole. This is infinity by infinity form. Now L'Hopital apply करोगे. Differentiation of ln cosecant x. ln cosecant x differentiation करोगे बेटा. This is limit x approaches to 0 e power 1 upon cosecant x into differentiation of cosecant x is differentiation of cosecant x is minus cosecant x into cot x whole divided by minus 1 by x. Cosecant cosecant cancel. नीचे 1 by x square shift हो जाएगा ऊपर. This expression is written as limit x approaches to 0 e shift हो जाएगा. This is x square minus भी cancel हो जाएगा. x square into cot x. Put करोगे. Now cot x put करोगे. This is 0 and tan 0 is 0. Cot 0 is not 0. Therefore, we write this expression as a limit x approaches to 0 e x square upon tan x. Now x square is written as x into x. X square is written as x into x. Now this expression is 1. Now remaining term is e raised to power 0. Because value of x0 put करोगे, this is 0.
आंसर इज अगेन 1 इन दिस क्वेश्चन, आंसर इज ऑल्सो 1। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन बस फर्स्ट टर्म यूज करना, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, हर बार विद सेम स्टेप्स हो जाएगा। नाउ सैंडविच थ्योरम और स्क्यूज प्लेट थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, व्हाट इज सैंडविच थ्योरम? सैंडविच लाइक सिंपल सैंडविच, जो सैंडविच है किस तरह बनेगा सैंडविच? इफ एफ जी एंड एच real functions, if these three terms are real functions, f g of x lies between f of x and h of x for all x in the common domain of definition for some real number c, if these terms, if first and last term is equal to L, then g of x is also is equal to L. Sandwich theorem means if function, if it is a function g of x, अगर कोई function g of x है and one another function है, this is f of x, another function है, this is f of x है function, sorry, ऊपर function है h of x and other function is g of f of x. Actually this is a sandwich, means if g of x, देखो g of x, this function, if this function lies between f of x and h of x and at particular point a, sandwich बन जाएगा, at this particular point a ऊपर sandwich हो जाएगा, means if f of x and at particular point a, its f of x and h of x answer will be, means first term and last term answer will be, answer of first term and last part answer है, function of last part भी L हो जाएगा, then sure है function of g part is also L, function of limit of this part is also is equal to L, limit of this part is equal to L. क्लियर है टर्म? नाउ इंपॉर्टेंट है, इसी साल क्वेश्चन आया जेई 2021 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम, मार्च शिफ्ट क्वेश्चन है 2021 क्वेश्चन। नाउ द वैल्यू ऑफ लिमिट r approaches to infinity, find out करोगे, zent of r, zent of 2r up to so on zent of nr, whole divided by n square, where r is non-zero real numbers, then zent of r denotes the greatest integer, where zent of r denotes the greatest integer, where zent of r. Now property for zent of x, property use करोगे for, what is the property for zent of x जो इस क्वेश्चन में अंदर यूज करोगे, zent of x always lies between x and x minus 1, property यूज करोगे for zent of x, this property, zent of x always lies between x and x minus 1, zent of x always lies between x and x minus 1 and x. Now according to this property, if we write r, first term r, this term is equal to r and this time greater than r minus 1. Similarly, this if we write nr, last term is nr, if we write nr, this side nr minus 1 and this side nr, nr minus 1 and nr terms in. Now if we add all the terms for this term, if we add all the terms, we get, if we all the numbers, add all the numbers, we get left hand side is r, step check करो, r common करो from these terms, this is 1 2 3 up to so on n,
माइनस वन एन टाइम्स आ जाएगा, वन एन टाइम्स आ जाएगा, दिस इज माइनस एन, लाइज बिटवीन, इंटरनल टर्म सेम आ जाएगी, जो भी इंटरनल टर्म है, इंटरनल टर्म इज आर, internal term is zent of r, internal term is zent of r, zent of 2r, and up to so on, zent of nr is less than is equal to last terms r, 2r, 3r, up to so on nr. Last terms are these terms. Now r common आ जाएगा, similarly r common करो एन टर्म लिखो, r common करो एन टर्म लिखो, r कॉमन करोगे, दिस इज 1 2 3 अप टू सो ऑन n. फॉर्मूला फॉर दिस नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर फॉर्मूला, दिस इज n प्लस 1 बाय 2 माइनस n, दिस साइड इंटरनल टर्म सेम आ जाएगी, इंटरनल टर्म सेम आ जाएगी अप टू n r, एंड लास्ट टर्म अगेन फॉर्मूला, दिस इज n into n plus 1 upon 2. According to question, required term है divide by n square. Divide by n square करो in all the three terms, divided by n square, divided by n square, and this side be divided by n square. Clear है according to question? And use करो limit r approaches to infinity. Limit r approaches to infinity use करोगे, limit n approaches to infinity आएगा बेटा, limit n approaches to infinity. This term is limit n approaches to infinity. This expression is, अगर term use करोगे, n plus 1 into r by 2 whole divided by n square. Second term same आ जाएगी, n approaches to infinity, zent of r plus up to so on nr divided by n square. Similarly last term same आ जाएगी, last term same, limit n approaches to infinity, this is r n into n plus 1 upon 2 n square, 2 by n square. If this term approaches to infinity है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम पावर है, न्यूमिनेटर n square and डिनोमिनेटर भी n square है, याद है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम पावर आए, then a naught by b naught is your final answer, a naught by b naught is your final answer, a naught by b naught is your final answer. Then पुट करोगे, देखो स्टेप की बनेगी टर्म, n into n square, coefficient of numerator term is r by 2, denominator term coefficient is 1, then answer of this expression is r upon 2. Similarly answer of last term check करो again, इसका coefficient की होगा n square term, its coefficient is r by 2 and denominator coefficient is 1, therefore its answer is also r by 2. फर्स्ट टर्म आंसर r by 2 है, सेकंड टर्म आंसर r by 2 है, देन इंटरनल टर्म आंसर अकॉर्डिंग टू स्क्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम इस आंसर इज इक्वल टू r अपॉन 2. अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम आंसर इज r by 2 एंड आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, r by 2, देन आवर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, r by 2. क्लियर है टर्म? r अपॉन 2 कोएफिशिएंट्स चेक करना. इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट a नॉट बाय b नॉट. इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था a नॉट बाय b नॉट, किस तरह कोएफिशिएंट्स आ जाएगा. क्लियर है? नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सैंडविच थ्योरम. इजी क्वेश्चन है. इन ईयर 2010 क्वेश्चन, if r be a positive increasing function, function increasing है, left to right ऊपर जाएगा, then limit x approaches to infinity, this term is given, and limit x approaches to this term normal है, function increasing है, that means f of 2x lies between f of x and f of 3 of x. f of 2x lies between these two numbers. Now divide by, if we divide by f of x करोगे, if we divide by f of x, this term by f of x and this term by f of x,
इफ वी डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स, क्लियर है स्टूडेंट्स, क्योंकि रिक्वायर्ड है इन टाइम, वी गेट फर्स्ट टर्म एज अ 1, लिमिट यूज करो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी जो कि रिक्वायर्ड है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इन फर्स्ट टर्म वी गेट 1, सेकेंड टर्म f of 2x by f of x, and last term limit is also, we use this term as a f of 3x by x, f of x. Now last term answer is also is equal to 1, check karo, this term is given, this term is equal to 1, f of 3x upon f of x, f of 3x upon f of x, its answer is equal to, this answer is 1 given है, फर्स्ट टर्म 1 ही आएगी, 1 ही आएगी फर्स्ट टर्म भी, therefore first term answer is 1, last term answer is 1, therefore internal is also equal to 1, therefore internal term answer is also is equal to 1. क्लियर है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, नॉर्मल टर्म चेक करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन. आई थिंक दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड काफी कंसेप्ट्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे विद दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.